Good morning, students. Today, for class 11th, one of the most important topic, which is error analysis, we will discuss few tips how to solve the problems of error analysis. When you say error, it means whenever you have any measurement, we always have, the mistakes are always there. Why these mistakes? These mistakes may be due to personal things. These mistakes may be due to random things. When you are calling about the personal things, means you have the imperfection in measuring, number one. Number two, faulty instruments are also there. Number three, some physical factors like temperature, pressure, etc. are also there. Many of the physical quantity varies with pressure and temperature, so it is possible that the true value is different from the measured value. And this difference of true value and measured value is called error. So error is difference between true value and measured value. First of all, you must know what is this true value. If you are talking about true value is simply nothing but just the mean or average value. Such as if you have the three observations x1, x2 and x3. You want to find out what is its true value. Its true value will be simply x bar, that should be equals to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. This is called basically true value. So whenever you want to find out true value, just go for the average of these three values. You will be able to find out what is called true value. Once you have true value, in the measurement you have the first kind of error is usually absolute error. In absolute error, we denote it with this symbol del x, and this must be equals to mean value minus measured value. Individually, for first measurement, it is x bar minus x1. Similarly, for second measurement again, it may be x bar minus x2. Third measurement again, we have x bar minus x3. So we will get the different values called the absolute errors, del x1, del x2, del x3. Now, after finding absolute error, we must go for the mean absolute error. In mean absolute error, we will simply find mean of absolute error. And this is denoted by this symbol. We always go with the modulus of this. So the first absolute error, del x1, just find the modulus. Del x2, del x3 divided by 3. Here modulus means, for modulus, if you have minus 2, that is equals to 2 and the value is only 2. So we consider only the positive values, then it is called the modulus. These are called modulus values. Then after finding mean absolute error, we can calculate the relative error. And in relative error, it is the difference of mean absolute error divided by mean. Mean absolute error, as we are having this symbol del x bar, mean is x bar, so we can find out x bar is here only, del x bar is here only, so we can find out the relative error. And last but the most important, which is usually there in the calculation, is the percentage error. If you want to find out percentage error, what you need to do, just calculate relative error into 100. Relative error is del x bar. This is x bar. When you will multiply it with 100, what you will get is percentage error. So you have in measurement true value, mean or observed value. First of all, you will find with these three variables, maybe 4, maybe 5, any other variables are there. Once you will calculate true value, go for the absolute error, that is mean minus measured. Number 3, go for the mean absolute error, that is the mean of all absolute error, taking their modulus. Important thing is, they may be positive or negative, but this is always positive. Then you go for the relative error, which is mean absolute error upon mean. Finally, you can go for the percentage error, that is relative error into 100, del x bar upon x bar into 100, so it may be percentage error. Any calculation, any
values. You can find out the errors in this manner to calculate the percentage value. But the important thing is how we can propagate errors in mathematical calculation. There are 4 mathematical calculations: addition, subtraction, division and multiplication. How we go ahead with the errors when you have these 4 things? Let's see one by one that how the error will propagate in mathematical calculation. Starting with the first one. If I'll take first one, if any a is there, say a1 plus del a1. This is the first value, that's the which we are calling as the a value. At the same moment, if we have another value called b value, with this b1 plus del b1, first is the addition. Say z is the operation which is a plus b. We need to add these two. So z we will write like this. It should be equals to a1 plus del a1 plus b1 plus del b1. In this manner, a1 plus b1 plus minus, we must go with this because they are usually with plus minus sign. So we must have the plus minus sign here. So plus minus here, then you add. So the absolute error must be different and this part must be different whenever you want to find out. Now, if you want to find out what is error in z, so z is also expressed like this. That is the best one. Z plus minus del z. It must be like this, where z is a1 plus b1. Del z. What is error in z? You can say del a1 plus del b1. This is first of all when we go for the addition. Addition looks like this. Similarly, if you want to just subtract the two quantities, be confident in subtraction also. You know, in your junior classes also you discussed subtraction means for the same operation, the second operation is subtraction. So I just put a line here. Subtraction is again if z equals to a minus b. Now this time with error, if I want to write down del z, a is a1 plus minus del a1 minus b plus minus del b1. This is the first part. Now you can put a1 and b1. So the value a1 minus b1 must be here, plus minus here del a1. Be careful, error part always adds. Even in subtraction also we need to add these two. So यहाँ पर मैं important note लिख रहा हूँ, error always add. चाहे वो subtraction हो चाहे वो addition, हमेशा error part को हम add ही करेंगे. So यहाँ पर हमारे पास में जो first part है that will be because of these two values are there से. So you can have like this. अगर हम इसका example लें, a की value दे रखी है हमें 2 plus minus 0.4, b दिया हुआ है 1 प्लस माइनस 0.2. अब पहला ऑपरेशन है z इक्वल्स टू a प्लस b करें तो हमारे पास में हो जाएगा इट शुड बी 3 प्लस माइनस 0.6. दूसरा ऑपरेशन अगर मैं कहूँ z को a माइनस b करो, so what you need to do, again you will write 1 but here it is 0.6 only. Check it, 0.6 0.6. इनमें हमारे पास में एडिशन था तो हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन था तो हमने सब्ट्रैक्शन किया, लेकिन एरर पार्ट में इन दोनों को ऐड ही किया यहाँ पर भी और इस पार्ट के अंदर भी हमने इसको ऐड ही किया. दैट इज हाउ वी कैन गो अहेड विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एरर्स. अब तो इंपॉर्टेंट चीजें और आती है. अच्छा, इन दोनों में बाय द वे आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज परसेंटेज एरर. देखिए ये ध्यान से देखिएगा चीज. हमें अगर दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू a1 प्लस माइनस डेल a1, व्हाट इज परसेंटेज एरर. तो यहाँ पर ये जो पार्ट है और ये पार्ट, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर और ये है एक्चुअली हमारा जो मीन है वो. सो यू ऑलवेज गो विद लाइक दिस, रिलेटिव एरर इनटू 100. नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर इन दिस? रिलेटिव एरर इज डेल a1 अपॉन a1. सीधा सीधा कर सकते हैं आप. अब बात करें परसेंटेज की. सो परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो वी गो विद दिस डेल a1 अपॉन a1 इनटू 100 के साथ. अभी अगर आपको z में निकालना है कि व्हाट विल बी परसेंटेज एरर इन z, सो अगर आपको चाहे ये वाला एडिशन में निकालना है चाहे आपको सब्ट्रैक्शन में निकालना है, हमेशा ध्यान रखिएगा परसेंटेज एरर निकालने के लिए फॉर एडिशन
डेल A1 प्लस डेल B1 को ऐड कर दो, उसमें से A1 प्लस B1 जो हमने लिखा था उससे इसको डिवाइड कर दो और उसके बाद में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एडिशन का परसेंटेज एरर है, ये इंडिविजुअल टर्म का परसेंटेज एरर है। सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्शन का था तो इससे इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को आप डिवाइड करते और फिर आप 100 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास में सब्ट्रैक्शन के अंदर भी एरर आ जाता। अब बात आती है, अगर इन दोनों क्वांटिटीज का हमारे को तीसरा ऑपरेशन देखना है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर खास बात ध्यान में ये रखने की ये है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले रिलेटिव एरर, उसके बाद में हम बाकी की कोई भी चीज करते हैं। सो नेक्स्ट इज एरर इन मल्टीप्लिकेशन। Here you can see if z equals to a into b, you just go with this del z by z, del a1 by a, del b1 by b1। ये हमारा सबसे पहला ऑपरेशन होगा जब भी हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, a into b, so just find out del a by this one del b1 by b1। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए एरर इन डिवीजन, z इक्वल टू अगर दे दिया जाए a अपॉन b, अब मैं वापस पूछूं व्हाट इज डेल z बाई z, फिर से देखिएगा डेल a1 बाई a1 प्लस डेल b1 बाई b1, एरर ऑलवेज ऐड। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ऐड हुआ था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के अंदर ये एरर का पार्ट ऐड हो रहा है। सो हियर दैट एरर ऑलवेज ऐड इन एनी ऑफ द कैलकुलेशन। अब देखिए अगर हम कहें एरर्स इन पावर कैलकुलेशन कैसे किया जाए, तो ये देखिएगा जैसे अगर मैं कहूँ z इक्वल्स टू a क्यूब, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा a इंटू a। अब पूछा जाए व्हाट इज डेल z बाई z, इंडिविजुअल को देखो डेल a बाई a, डेल b a बाई a अगेन